can discuss the base theorem also today only. So I write the heading, that is addition theorem. So our heading is today addition theorem on probability. Addition theorem on probability. Addition theorem on probability. In the exam, the question will be given state and proof. Statement and proof. You have to write. What is the statement say? If A and B are any A and B are any two events of a random experiment, random experiment, and P is a probability function. P is a probability function. P is a probability function. What do you mean by probability function? What is the definition of probability function? A function which maps from A to B following the conditions. What are the conditions? You know that probability of E must be greater than or equal to 0. And A and B are any two sets and they are disjoint. Then union can be written in addition form. I already explained this point. Do you remember that? Yes. Yes. Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is your statement of addition theorem. Now we have to write the proof of this. Now proof will be discussed in two different cases. Case number one, when A and B are disjoint, they don't have any common area. And in the second case, when they are joint, when they should have some common area. In both of the cases, we have to discuss the addition theorem on probability. एक दे दिया. Suppose this is set A and this is set B. Two different sets we have taken. Okay. And they are disjoint, no common area. Suppose this is A, this is B. So case one we have to discuss. Case one. If A intersection B, look at that, there is no intersection part, is equal to empty. They are not intersecting to each other. Immediately, if you want, I will give you the example also. Now, once if you take the probability of this on both sides, probability of A intersection B is equals to probability of empty. This is probability of A intersection B is equals to probability of empty set. Already it is given that P is a probability function. Probability function की property है ना, empty set is equal to 0. This is taken as equation number 1. Right? Now we have to prove that result.
You can see A and B are two sets and they are disjoint. So by union axiom, union property of probability function, probability of A union B can be written as, tell me that what probability of A plus probability of B. It is the first property of probability function. Now for my convenience मैं यहाँ पर एक जीरो भी अपने अपनी तरफ से ऐड करूँ. इसमें कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus, in place of zero, in place of zero, I can also write it as probability of A intersection B also. So in place of zero, I can write it as probability of A intersection B. Now in this case, this result is proved. See, इस case में ये result prove हो गया. Understand? If they are not having any intersection path. इसको समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ immediately. Look at that. For example, A is equals to 1 comma 2 and suppose B is equals to 3 comma 4. In if I ask you to find out A intersection B, what is your answer? Your answer is, sir, we don't get any common element, so that is equal to empty set. This is the best example. Their intersection is empty, taking this probability on both sides, and then probability of empty is equal to 0. Union axiom, we can use it. Minus 0 लिखेंगे, minus 0 की value place करेंगे. That will be first part will be. Now second part when they should have some common area. In that case, how to? आप आंसर ही नहीं दे रहे. Please give me the answer. Hello, are you there in the meeting? Hello. Hello. Yes, sir. आप आंसर दिए तो मेरे को पता चलता है कि आप मीटिंग में हैं. This is A, D. this is B, and this is your common area. This is your common area. Intersection part is this one. This is A intersection B actually. This is nothing but A intersection B. There is a common area between A and B. So in the second case, we are going to prove the result. So we write it here, case 2. Case 2. If A intersection B is quite opposite of this, not equal to empty set. In that case, again by union axiom, union property of probability function, probability of A union B can be written as probability of A plus probability of B, which is also equal to, you can see here, probability A तो मैं लिख रहा हूँ as it is plus, यहाँ पर देखिए set B वैल्यू क्या है. This is your set B. Okay, I want set B. Set B can be written as, B में से अगर ये वाले इंटरसेक्शन पार्ट को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो देखिए B, अगर आपको ये B पार्ट होना है तो B में से ये इंटरसेक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B can be written as B minus probability of B minus A intersection B.
अगर आपको ए बी होना है तो बी में से इंटरसेक्शन को हटा देना पड़ता। अगर आपको ए होना है ए में से ए इंटरसेक्शन को हटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई probability of A plus just multiply with the probability of B, and then here multiply with probability of A intersection B, and this part will be same. Probability of A union B will be same. And now we have proved the result in this case also. And if you combine both of the cases, your theorem will be proved. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. It is the proof of the addition theorem. And now if you have any doubt, you can ask me. I will go for base theorem otherwise. Have any doubt in this? No, sir. Chal, we can go for base theorem. 1 second, I'll just put this in charging here. So next page I will go and we'll prove base theorem, which is also very, very important. Question will come straight into base theorem. And base theorem के बारे में मैं एक बार आपको बोल दूं, to give the importance for this theorem. 2025 के हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में एक्सटर्नल एग्जाम में बेस थ्योरम था, आपके पास भी था। बेस थ्योरम इन एवरी क्वेश्चन पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पेपर में, हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर में बेस थ्योरम जिसके सिलेबस में है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जिसके सिलेबस में है, लास्ट ईयर उनके क्वेश्चन पेपर में बेस थ्योरम का या फिर बेस थ्योरम का रिलेटेड क्वेश्चन कंपल्सरी आता। तो फर्स्ट वी राइट द स्टेटमेंट। हेलो एक्स गर्ल्स, Yes. जाजिया है इधर। तो स्टेटमेंट क्या है, देखिए अच्छे से देखिए, स्टेटमेंट भी थोड़ा ज्यादा बड़ा ही। सपोज try to understand E1, comma, E2, comma, E3, and so on En are n mutually exclusive and exhaustive events. I will tell you the meaning of this also, but statement you have to write it. That's what I am writing. Exhaustive events बहुत आसान है यूज करने के लिए। of a of a random experiment। एक मिनट, अभी मैं आपको बैक एक रजिस्टर लिखना है। क्या नाम है आपका? सना। दोनों में से कौन लिख रहे बोल? एक रजिस्टर लिख प्लीज। जाजिए, आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है, आप लोगों के साथ ज्यादा दुआएं भी हैं। हो गया एक हफ्ता, उसके बाद गुड बाय। सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर पूरा 1 साल। देखो मैं नामा भी लिख दिया। 45 है ना, 45 दिन यहाँ पर डेट डाली हुई। सबको मिनिमम 35-36 क्लासेस डाल रैंडमली। एक 8-10 वीक में 8-8 ऑप्शन डाल देता। 40 45
35 से कम हुए तो परसेंटेज गिर जाए, 35 से बढ़ना सबको नाम लिख दिया, डेटा में नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, खाली 1 2 3 रैंडम एक क्लास चल रही मेरे ऑनलाइन, उससे बताओ। हेलो, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। Exhaustive events of a random experiment, random experiment with, इसका खाली स्टेटमेंट ही बहुत बड़ा है, बाकी करने का जो काम है वो छोटा ही है। Probability of EI is not equal to 0 or I is equals to 1 2 and so on to n. Then for for any event, capital A capital A with capital A with probability of A to be greater than 0, we have to prove this result। अच्छे से देखिए कैसा मैं रीड कर रहा हूँ उसमें। Probability of EK given A is equals to probability of EK into probability of A given EK by summation I is equals to 1 to n probability of EI into probability of A given year। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपको प्रूव करना है। अब मैं इसका, दिस इंग्लिश वर्जन इज देयर, आई वांट टू राइट दिस इन ए मैथ्स वर्जन, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आई वांट टू राइट इट। बिफोर दैट try to understand the statement and its meaning। सपोज ये आपका एक सुपर सेट है, बड़ा सेट है, ठीक है ना। सी हियर, सपोज दैट E1 E2 E3 एंड सो ऑन En आर n, यहाँ पर एक E1 है, सपोज इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। some events are there, E1 is one event, E2 is one event, E3 is one event, like that. En is one event, and in their events, we have one more, that is nothing but A is also one event। अब जरा अच्छे से समझने की कोशिश करिए, प्लीज रिप्लाई भी करिए साथ में। ये आपका सुपर सेट है S, इट कंटेन्स सम एलिमेंट, E1 is one element, E2 is one event, E3 is one event, like that। There are so many events are there in that superset। Suppose that A is also one event, and now what is the meaning of mutually exclusive and mutually exhaustive का मीनिंग मैथमेटिकली कैसा लिखना, देखिए। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाय हाइपोथेसिस। बाय हाइपोथेसिस means according to the given statement I is not equal to J। क्या मतलब इसका? I is not equal to J means suppose I value is E1 and J value is 2, I value is 1, J value is 2, they are not equal। You see, E1 is different, E2 is different, E3 is different, E4 is different, जितने भी इसमें events है सब different है। Now mutually exclusive means if you take their intersection EI intersection EJ is equal to empty set। क्या मतलब इसका? E1 और E2 में कोई इंटरसेक्शन हो रहा, कुछ कॉमन हो रहा क्या? देखिए, हो रहा? नहीं होगा। नहीं हो रहा। E1 और E3 में कुछ कॉमन हो रहा? नहीं हो रहा। E1 नहीं। और E4 में
मतलब all the sets are disjoint sets, so their intersection is empty. इसका मतलब है mutually yes, exclusive. And म्यूचुअली एक्सहेसिटिव का मतलब जब भी आप इसका यूनियन लिखेंगे, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 यूनियन E6, ये सब ई आईज का अगर आप यूनियन लिए तो क्या वैल्यू आती है आपको, दैट इज सुपर सेट एस। ये चीज आपको समझ में आ गई तो थ्योरम समझ में आ गया। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, और जब इसका यूनियन करेंगे पूरे सेट्स का तो ऐसे चाहता ना, क्लास का रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे स्टूडेंट्स का अगर यूनियन करे तो क्लासरूम होती है ना टोटल। yes, ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो मैं प्रोसीड करके उसको खत्म कर, नेक्स्ट पेज। Since now you can see this the same figure, here you see A, can we say A is a सबसेट और इक्वल टू एस बोल सकते हैं अपन। ए क्या है, एक सबसेट है ना कैपिटल एस का। yes, sir. इसको मैं एग्जांपल से भी बता दूं, एक एग्जांपल ले लो। सपोज एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, this is capital S. Suppose the small a is equal to 1 2 3, can we say a is a subset of S बोल सकते हैं ना, एक पार्ट है ना, ए एक सब सुपर सेट का पार्ट है ना। हाँ, और जब हाँ, भी अपन इसका इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट क्या आता है, कॉमन ए इंटरसेक्शन वन एस टू करे थ्री तो 1 2 3 का मतलब एच है ना। हाँ, तो ये पॉइंट को अपन टेक्निकल पॉइंट को यूज करके अपना थ्योरम आराम से प्रूफ कर लें। नाउ लुक एट ए कैन बी रिटन एज, सिंस ए इज ए subset are equal to capital S, then A can be written as A intersection S. A can be written as A intersection S, which is equal to A intersection. The value of S is already been here. We have union of I is equal to 1 to n EI. Union of I is equals to 1 to n EI. Now taking probability on both sides. Probability of A is equals to, देखिए probability लेंगे क्या हो जाएगा, probability when you are taking the probability, इसका एक और स्टेप अपने यहाँ पर लिख के प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। यूनियन टेक आउटसाइड, आई इज इक्वल्स टू 1 to n, देन ए विल बी मर्ज विद ए इंटरसेक्शन ई है। इससे क्या मालूम होता है आपको, व्हेन यू आर टेकिंग द प्रोबेबिलिटी यूनियन विल बी चेंजेस टू समेशन। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में पुकार पुकार के बोला था, यूनियन विल बी चेंजेस टू एडिशन बोल, सो मेनी यूनियन विल बी कन्वर्टेड टू सो मेनी एडिशंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई है, जस्ट वी हैव टेकन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। अब यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। यू नो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, ए गिवन बी की वैल्यू अपन लिखे थे फर्स्ट क्लास में। हाउ टू राइट दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, करेक्ट। yes, just cross multiply these two and get the value of probability of a intersection e I, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इंटरसेक्शन ई आई की वैल्यू निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू summation, we don't want to disturb, I is equals to 1 to n, and if you cross multiply and write it here, you get probability of ei into probability of a intersection ei, and this will be taken as your first equation.
यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो। फर्स्ट एक क्वेश्चन मतलब आपको आधा काम उसका हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू। फिर से अगर आप फिगर को देखें, लुक एट दैट फिगर। इन फिगर में आपको व्हाट डू यू नोटिस? फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड बोल सकते हैं। ए का इंटरसेक्शन E1 के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का इंटरसेक्शन, अब सिंपल वर्ड में ई आई लिख दिया यहाँ पर मैं, ई जे। सपोज आई वैल्यू 1 है, जे वैल्यू 2 है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से, ये वाला ए का इंटरसेक्शन ई आई के साथ करे तो क्या होता, ए का इंटरसेक्शन E2 के साथ करे तो क्या होता, वो बताना चाह रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू, you see in these two we take a intersection common, what is left over here, ei intersection ej, right? This is equals to a intersection ei intersection ej value. What is this one? It is equal to empty set. This is equal to empty set. तो जब a का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ होगा, सिंपल वर्ड में a को अगर कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करे तो आंसर तो जीरो आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब a का, ये देखिए द मीनिंग ऑफ दिस इज a का इंटरसेक्शन किसके भी साथ नहीं है, दैट आई वांट टू टेल यू, दैट इज एम्प्टी। फाइनली एक और डेफिनेशन को यूज करके आपका रिजल्ट प्रूव। अब अपना मेन बाय यहाँ पर वर्ड्स में लिख के करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी I want to find out which value I want to go for this one. Probability of ek given a, इसमें कंडीशन ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो क्या हो, बोलिए, कम ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ek इंटरसेक्शन a बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओनली, नो? Yes, यस और sir. नो? यस। अब लास्ट Yes. क्लास में अपन बताए थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ए इंटरसेक्शन ई के और ए ई के इंटरसेक्शन ए दोनों का मतलब सेम ही होता, मतलब दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ई के बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको मैं अगर एक और बार में ऐसा यूज करा, किसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई के की वैल्यू अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करें तो व्हाट यू विल गेट इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए, ए इंटरसेक्शन ई के, ए इंटरसेक्शन ई के बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके प्लेस पर रिप्लेस कर देते। दिस इज फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के गिवन ए इज इक्वल्स टू this numerator value after cross multiplying I can write it as probability of ek into probability of a given ek Mm. by probability of a value, यहाँ पर from 1, probability of e की वैल्यू क्या है, probability of a की वैल्यू समीशन I is equals to 1 to n probability of ei into probability of a given en, that's your finally result which one we have to। अब यहाँ देखिए ये आपको प्रूफ e के a given e के ei a given en, ये इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोल नहीं सकता। आप खुद अंडरस्टैंड कर लीजिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करें, एडिशन थ्योरम का कंसेप्ट अपन कंप्लीट करें, बेस थ्योरम का क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आने वाला है। और अपन इसके नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर प्रॉब्लम भी देखेंगे। उसके बाद अपन इसके ऊपर Okay. एक्सपेक्टेशन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसको बोलते हैं। अब अपन जितने भी Mm-hmm. थ्योरम्स अपन प्रूव करें, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम, इन सब के ऊपर अगर क्वेश्चंस करें अपन रैंडमली तो ये Mm-hmm. यूनिट खत्म हो जाता। अब आप Okay, यूनिट में sir. आप क्या करना है, ये तीनों के ऊपर प्रॉब्लम करना है
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का डेफिनेशन करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डेफिनेशन करना है, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन बताना है, एक्सपेक्टेशन किसको बोलते हैं वो बताना है। ये चीजें अगर आपको मालूम हो गया तो यूनिट खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ओके बताए इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं वो आपको सीखना। जी। ठीक है, तो मैं आपको उसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के यूट्यूब पर मिल जाता है, पीडीएफ सेंड करता हूँ। ठीक है, जी विल एंड ऑफ दिस क्लास। ओके थैंक